Yes, sir. आज के बाल भजन संध्या प्रोग्राम में आर्य समाज, आर्य वीर वीरांगना दल अजमेर राजस्थान, जय गुरुदेव चैरिटेबल ट्रस्ट चेन्नई तमिलनाडु की तरफ से आप सबका स्वागत है. इनरे बाल भजन संध्याविल आर्य समाज, आर्य वीर वीरांगना दल अजमेर राजस्थान, जय गुरुदेव चैरिटेबल ट्रस्ट चेन्नई சார்பாக உங்க எல்லாருக்குமே வணக்கம். இன்று நிகழ்ச்சி தொடங்குவோம். पहले कोई बच्चा गायत्री मंत्र का जाप 3 टाइम करेगा. இன்னைக்கு ஒரு குழந்தை நிதர்சனா சொல்றியாமா? வீடியோ ஆடியோ ஆன் பண்ணு. பூர்வஜா வீடியோ ஆன் பண்ணு, ஆடியோ ஆன் பண்ணு, எல்லாமே ஆன் பண்ணுங்க. வைபவ் விஷால் भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ॐ शान्ति शान्ति शान्ति. நினைக்கிற பூர்வஜா ஆடியோ வரல உங்களுக்கு. पूर्वजा ऑडियो इल्ला. पहला बच्चा जो भजन गाएगा इस प्रोग्राम में, कोई भी बच्चा कोई भी हिंदुस्तानी लैंग्वेज में गा सकते हैं, ठीक है? नो रेस्ट्रिक्शन. सो अगर कोई तमिल में बोलता है तो हिंदी में बोलता है. म्यूजिक हैज नो लैंग्वेज. गाने की कोई जबान नहीं होती है, उसका खाली आनंद लीजिए. छोटे छोटे बच्चे गा रहे हैं और अगर आप भी चाहते हो तो भजन गा सकते हो. இன்றைய நிகழ்ச்சியில் குழந்தைங்க எனி இந்தியன் லாங்குவேஜ்ல பாடுவாங்கம்மா. ஓகேயா? சோ எல்லாரும் அந்த பாடுற பஜனோட மகத்துவம் உங்களுக்கு புரியுதோ இல்லையோ, அதோட ஆனந்தத்தை மட்டும் எடுங்க. ரைட்? என்ஜாய் த பஜன். ரைட்? நிதர்சனா இப்ப எந்த குழந்தை இப்போ வரல, ஃபர்ஸ்ட் நீ தான் பாடுற, அதுக்குள்ள வந்துருவாங்க. पहली बच्ची निदर्शना गाएगी भजन. पाड़मा. Yes, sir. पाड़मा, ये टाइम वेस्ट आगुदिल्ला. पाड़मा. ये ना पूर्वजा का कनेक्शन वरला. हाँ सर. एकदन्तं विनायकं विघ्नहरं भजगजाननं एकदन्तम् उपास्मृतं विघ्नहरं भजगजाननं मूषिकवाहनगजाननं मोदकहस्तगजाननं श्यामलकर्णगजाननं नीलमितशोस्त्रगजाननं एकदन्तं विनायकं विघ्नहरं भजगजाननं एकदन्तं मातं विघ्नहरं भजगजाननं. अவ்வளவுதானா? मेहरबानी करके सब अपने अपने हाथ ताली बजाएं. ताली बजाने से सुनने गाने वाले को भी अच्छा लगता है. आपके जो अकुपंचर पॉइंट्स है सब अच्छे कंप्रेस होंगे, आपकी भी सेहत अच्छी होगी. तो फॉर फ्यू सेकेंड्स unmute your mic, clap and again mute. Okay? It will do a lot of good to you for your health, because health is in your palms. All these are points which are controlling your body. And if by clapping you're going to
revitalize, relive your organs so that you will be always healthy. Okay. अगली बच्ची है पूर्वजा इरकिया मांगे. अगली बच्ची पूर्वजा भजन गाएगी. हेलो पूर्वजा सर वीडियो ऑन पनी पाडुमा. जय गुरु ओंकारा जय जय सद्गुरु ओंकारा ओम विष्णु सदा ऑडियो पोइट हर हर महादेवा. वीडियो ऑन पन्नुमा. वीडियो ऑन पन्ने. सरी ओके पाड हर हर महादेवा जय गुरु ओंकारा जय जय गुरु ओंकारा जय जय सद्गुरु ओंकारा ओम ब्रह्मा विष्णु सदा शिवा ब्रह्मा विष्णु सदा शिवा हर 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 महादेवा हर 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 महादेवा. अवलोदना. Everybody please clap. Very good. Somebody is at least listening to me. Very good. Thank you. Very good. Very good. Next, Purva Jamma Srimati Uma Maheshwari ji. Uma Maheshwari ji, பாடுங்க. உமா மகேஸ்வரி இருக்காங்களாமா? பூர்வஜா ஓகே. அடுத்தது அவங்க வரவா இல்ல வர நேரத்துல பாடுவாங்க. बीना जी आप अपना भजन प्रस्तुत कीजिए. Yeah, good evening. Good evening. Can you hear me? Yes. Yeah. नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का सदा न रहा है सदा न रहेगा जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा सर तुझको आके झुकाना पड़ेगा आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा सर तुझको आके झुकाना पड़ेगा वहाँ न चलेगा वहाँ न चलेगा बहाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का शोहरत तुम्हारी बह जाएगी दौलत यहीं पर रह जाएगी शोहरत तुम्हारी बह जाएगी दौलत यहीं पर रह जाएगी नहीं साथ जाता
नहीं साथ जाता खजाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। पहले तो तुम अपने आप को संभालो, कभी नहीं बुराई औरों में निकालो। पहले तो तुम अपने आप को संभालो, कभी नहीं बुराई औरों में निकालो। बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में, बताना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। दुनिया का गुलशन सदा ही रहेगा, ये तो जहां में लगा ही रहेगा। दुनिया का गुलशन सदा ही रहेगा, ये तो जहां में लगा ही रहेगा। आना किसी का जग में, जाना किसी का, आना किसी का जग में, जाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। थैंक यू। Very good. Very good. Vaibhav, you understand Hindi? Vishala Vaibhav irke yaar markanga. Sir, Vishal Gupta, sir. You understand what Benji sang? Do you understand the one line? किसी No, का sir. दिल दुखाना नहीं चाहिए. அவங்க சொல்றாங்க உலகத்துல என்ன பண்ணாலும் ஒரு காரியம் நிச்சயமா பண்ணக்கூடாது. என்ன தெரியுமா? இன்னொருத்தோட மனசு வந்து புண்படக்கூடாது. புரியுதா? You should not hurt other person's heart. That's what she was singing in the bhajan. Very good. Okay. Symbolic message. நிதர்ஷனா நீத சன்ஸ்கிருத்லாம் படிக்கிறியா? உனக்கு ஹிந்தி புரியாது? Yes, sir. புரிஞ்சுதா? சார் எனக்கு ஒழுங்கா புரியல சார், ஏன்னா கொஞ்சம் எனக்கு பிரேக் ஆச்சு. ஏன்னா நீ அங்க நீ உன் பாட்டு பாடிட்டு அவ்வளவுதான் ப்ரோக்ராம், நீ ரிலாக்ஸ் ஆயிருக்க, அட்டென்டிவ் ஆயிருமா? புரியுதா? மத்தவங்க என்ன சொல்றாங்க கூட கேளு, நான் இருக்கேன் டிரான்ஸ்லேட் பண்றதுக்கு. புரியுதா? ரைட்டா? वेरी गुड. नेक्स्ट हम रिक्वेस्ट करेंगे हम आशा मेहरा बहन जी को कि वो अपना भजन प्रस्तुत करें. नमस्कार. नमस्ते. कैन यू हियर मी? सुनाई दे रहा है? Yes, yes, ma. We can hear you. We can hear you. You can start. सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? Unmute your mic. Unmute your mic. Hello. Yes, now you unmute. Now you can sing. I can sing. Yes, you're audible. You sing. Navratri has started. I would like to sing a bhajan to Mata Rani. Very good. भवानी तेरे चरणों से लिपटे रहना, भवानी तेरे चरणों से लिपटे रहना,
करुणा निधि माँ दे दो मुझको, करुणा निधि माँ दे दो मुझको, अपनी लगन का गहना, अपनी लगन का गहना, भवानी तेरे चरणों से लिपटे रहना, भवानी तेरे चरणों से लिपटे रहना। और किसी को मैं नहीं जानूं, और किसी को मैं नहीं जानूं, जानूं तो बस तुझको ही जानूं। तन मन मैंने किया तुझे अर्पण, तन मन मैंने किया तुझे अर्पण, तोड़ न देना मेरी आस का बंधन, तोड़ न देना मेरी आस का बंधन। तेरे प्यार की गंगा में अम्बे, तेरे प्यार की गंगा में अम्बे, अब है मुझको बहना, भवानी तेरे चरणों से लिपटे रहना, भवानी तेरे चरणों से लिपटे रहना। सौंप दिया ये जीवन तुझको, सौंप दिया ये जीवन तुझको, अपने ही रंग में रंगना इसको, अपने ही रंग में रंगना इसको। चरणों से माँ दूर न भगाना, चरणों से ना दूर न हटाना, मुझको अभी ना कहीं और है जाना, मुझको अभी ना कहीं और है जाना। तेरे नाम का पावन चोला, तेरे नाम का पावन चोला, सजा के लिए है पहना, भवानी तेरे चरणों से लिपटे रहना, भवानी तेरे चरणों से लिपटे रहना। पद पंकज को छोड़ूं कभी ना, पद पंकज को छोड़ूं कभी ना, मुँह तेरे दर से मोड़ूं कभी ना, मुँह तेरे दर से मोड़ूं कभी ना। नस नस भीतर जोता दे, नस नस भीतर ज्योति जगा दे, भक्ति का रस पान करा दे, भक्ति का रस पान करा दे। मान भी ले अब जग जननी माँ, मान भी ले अब जग जननी माँ, इस सेवक का कहना, भवानी तेरे चरणों से लिपटे रहना, भवानी तेरे चरणों से लिपटे रहना। करुणा निधि माँ दे दो मुझको, करुणा निधि माँ दे दो मुझको, अपनी लगन का गहना, भवानी तेरे चरणों से लिपटे रहना, भवानी तेरे चरणों से लिपटे रहना। थैंक यू। वेरी गुड। பூர்வஜ அம்மா உமா மகேஸ்வரி அவர்கள் பாடுவாங்களா? நிதர்ஷனா கடைசி தடவை உனக்கு நீயும் நல்ல இடத்த உட்காந்து கவலைப்படாத, நீ வீடியோ தைரியம் ஆன் பண்ணா. விஷால், you also please switch on because Mataji is going to start a session. She would like to see you children so that she feels all the more energetic, telling you more good things about Bhagwan Sri Ramchandra. Uma Maheshwari ji, paadringla or shall I sing? Okay, now I will present Bhajan. Sir, I have a camera problem. Nama, okay. इतनी शक्ति
शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितने फूले फले जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना में न बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। हम ये सोचे हमें ना मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबके जीवन ही बन जाए मधुवन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन के कोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता। धन्यवाद। பூர்வஜமா இருந்தாங்கன்னா பாடலாம், இல்லனா कोई बच्चा गाना चाहता है? Anybody wish to sing? There is a new connection. We'll welcome him, Lalchan Rajani ji. If you want to sing any bhajan, you can unmute and put on a video and sing, sir. Even child is most welcome, sir. बच्चा भी गा सकता है. Anybody else wishes to sing the bhajan? Or I'll show a small video before Mataji's Pravachan time starts. Okay? 1 second. Okay. One minute. यह जो बैल आप देख रहे हैं, इसके मुंह में Very nice video. Children, elders, everybody will like it. It's in Hindi, but the scenes are there. You'll be able to understand. Even if you don't understand Hindi, not a problem, sir. यह जो बैल आप देख रहे हैं, इसके मुंह में एक कैन फंस गया था और ऐसी ही हालत में यह 6 दिन से भूखा प्यासा परेशान फिरता रहा। दरअसल यह बेसहारा बैल कई दिनों से भूखा प्यासा खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। भूख के कारण वो इतना उत्सुक हो चुका था कि कैन में बची घी को चाटने के लिए उसने अपना मुंह कैन में डाला।
पर कैन उसके मुंह के निचले जबड़े में बुरी तरह से जा फंसा। जो बेचारा 3-4 दिन से भूखा था, उसे क्या पता था कि आने वाले 6 दिन उसके लिए और भी कठिन होने वाले हैं। हमें जब रेस्क्यू लाइन पर कॉल आया तो कॉलर ने घबराई हुई आवाज में कहा कि जल्दी आइए, एक बैल के मुंह में 6 दिनों से कैन फंसा हुआ है। इन 6 दिनों से उसने कुछ भी खाया पिया नहीं है और ज्यादा देर हुई तो बैल मर भी सकता है। जब हम घटना स्थल पर पहुंचे तो कई लोग जमा हो गए थे। इन 6 दिनों में लोगों ने कई बार इस बैल को पकड़ने की कोशिश की, जिससे कि बैल अब इंसानों को देख करके ही भाग जाने लगा था। हमने डार्ट गन लोड कर ली और उसके पीछे चल पड़े, पर वो इंसानों से इतना ज्यादा डरा हुआ था कि वो हमें दूर से ही देखकर दौड़ने लगा। आसपास के लोग बैल को पकड़ने में हमारी मदद तो कर रहे थे, पर वो किसी के भी हाथ न आ रहा था। कई ऐसे मौके आए जहां पे हम बैल को पकड़ते पकड़ते रह गए। कहते हैं ना कि हाथ तो आया पर मुंह ना लगा। उसने हमें 1.5 घंटे तक भगाया। इसमें बैल तो नहीं थका, मगर हमारी टीम के पसीने छूट गए। और फिर वह हुआ जो हम बिल्कुल नहीं चाहते थे। भागते भागते बैल अब रोड पे जा पहुंचा, जहां उसकी जान तो खतरे में थी ही, पर रोड पर आते जाते वाहन चालकों की जान भी खतरे में पड़ सकती थी। स्थिति अब बहुत गंभीर हो चुकी थी। अगर हम उसे पकड़ने उसके पीछे भागते तो वह रोड पे चल रही गाड़ियों से टकरा सकता था। यह समय था सूझबूझ से फैसले लेने का। सर, इनको जनरेटर प्रॉब्लम आ रही है। हमने फाइनली यह समझा कि वो इंसानों से तो डर रहा है पर गाड़ियों से नहीं, और इसीलिए हमने फैसला लिया कि हम अपनी गाड़ी से ही उस पर डार्ट गन चलाएंगे। पर हमारे पास सिर्फ एक ही मौका था उस पर निशाना साधने का, जिससे पहले कि वो गाड़ियों से भी दूर भागने लगे। जैसे जैसे हम उसके नजदीक जा रहे थे, वैसे वैसे हमारी दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। साहिल ने ट्रिगर दबाया, सुई ठीक उसके गर्दन पर जा लगी और हम कामयाब रहे। पर कामयाबी की यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। डार्ट गन चलाते ही बैल घबराया और बिना देखे ही रोड के बीचों बीच दौड़ने लगा। पर भगवान की कृपा से वह रोड से होते होते जंगल की ओर कूद पड़ा और अब वो एक्सीडेंट के खतरे से बाहर था, जिससे कि हमारी जान में जान आई। अब समय था इंतजार करने का। दवाई का असर होने में 15 मिनट लगते हैं और जब वो नीचे बैठ जाता है तो हमें अंदाजा हो जाता है कि हम उसके पास जा सकते हैं। हमने उसके पास जाके उसके गले में रस्सी डाली और एक सुरक्षित जगह पर जाके उसे बैठा कर लिटा दिया। बैल की कंडीशन को देखकर मालूम पड़ रहा था कि वो बहुत दर्द में है और इसलिए बिना समय गंवाए हमने काम शुरू किया। स्टील का कैन होने के कारण उसके जबड़े के दोनों छोर कट गए थे, जिससे कि घाव बन गया था और उसमें कीड़े लग गए थे। कैन इतनी बुरी तरह से उसके मुंह में फंसा था कि वो निकाले नहीं निकल रहा था। बैल की यह हालत देख करके मन में यही ख्याल आ रहा था कि भूख क्या से क्या नहीं कराती। काफी जद्दोजहद के बाद हम फंसे हुए कैन को निकालने में कामयाब रहे। 6 दिन के दर्द और स्ट्रगल से निकलने की जो राहत थी वो उसकी आंखों में साफ दिख रही थी। हमने उसे फर्स्ट एड दिया और लोगों को बताया कि 1 घंटे बाद उसे कुछ खाने का दे दें। इन बेजुबानों की यही तो व्यथा है कि चाहे भूख लगे या दर्द हो, वो किसी से बयान नहीं कर सकते। और यहीं पर हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे बेजुबानों की मदद करें ताकि इनकी ऐसी दुर्दशा कभी ना हो। पढ़ो पातिंगला, आप सबने पिक्चर देखा ये 5 मिनट का वीडियो? Yes. किनको अच्छा लगा? बच्चे अपना निदर्शन पूर्व
படம் என்ன மெசேஜ் என்ன பார்த்த சொல்லு. மாதாஜி வந்துட்டாங்க, என்ன பார்த்த? Somebody explain what you saw in video. There should be some It's pathetic. It's pathetic. Really pathetic. Yes sir. Really pathetic. Yeah. Somebody interact. Nidarshana, Purvaja. Motivational. No child want to talk. This movie you saw, what a problem this bull is, and how the people went and saved it. Okay? What is the lesson from this most small story? Adla enna paadamma enna kathukano? Is choti humne kya seekha? Somebody reply. If I keep talking, it become monologue. There should be interaction. Hello. Tell me, who's talking? Who's want to convey? Sir, this is Vishal. The lesson which the video shows is to stop butchering. Stop butchering. Very good, ma. Very good. Very good. Very good. ये बच्चा बोल रहा है नॉनवेज नहीं खाने का, butcher नहीं करने का. We should not eat non-veg. Very good message, ma. Anybody else? कोई बड़ा भी बोल सकता है. पेरी में गुड़ा सोलना. Not only that, just we should not throw the empty tins like that. Very good. Very good, Giridhar ji. Thank you, Ji. Thank you. சொல்லுமா. சார் எனக்கு கொஞ்சம் நெட்வொர்க் ப்ராப்ளமா இருக்கு சார். நீங்க சொல்றது எதுவுமே கேட்கல. பிரேக் ஆகி வருது சார். சரி ஓகே. நான் லிவ் ஆயிட்டுமா சார்? So stop littering. Very good. Yes. Yes. எல்லா இடத்துல குப்பை போட கூடாது. ஜா देखो अब डालते हो. Just like that, we should not throw away the everywhere. Very good. Very good. Yes. And there's one more point. So that's what I said, sir. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. And one more thing which I learned, since the animals don't have a mouth to talk, Yes. when you're walking on the road, whatever your important or unimportant task is, if you see any of this animal in pain, let us do the best. Or if not, in the morning hours on the road, we can carry some biscuits to feed the dogs or give water to the crows. We can do something for them which costs us no money and earns a lot of dua. Okay? Right? Let there be interaction, because without interaction, only if I keep talking, then I lose the interest. I feel people are sitting only because I've invited them. Nay, you should also get interactive and learn. That's how you will feel the session very interesting. बड़े भी बोल सकते हैं. ठीक है माता जी, नमस्कार आपको. माता जी नमस्ते. नमस्ते माता जी. आवाज ठीक है मेरी? You are not in the program for the past 2 weeks. Yes. Last week I was out of I was in a camp, in Sadhana camp. And last time here was so disturbance in our house. There was whitewash paint, all these things. So Okay. sorry. Okay. No problem. This video taught us about that Bali Vaishya Devi Yajna. Children, we have learned from Acharya Naveen Mishra about Bali Vaishya Devi Yajna. We have to do. This is our duty to protect these mook, dumb, deaf, these animals. We are a human being. We can express our pains, our hurt, but these animals can't express. They only, I think they only take this hurtness in their bodies. So we should take care of all these animals. First of all, I would like to wish for New Year that is coming tomorrow. All of you, Happy New Year. This is our new one, not our, this is universal New Year. Exactly. Because we celebrate this January year
Yes, yes. 2022. Children, you see, is this universe is as old as this only 2000 years? No, This no, whole no. creation is so old, na? Yes. Billion years old. Then we celebrate this January 2022 years. This year is related only to with this Christ, the birth of Christ. But before that, this universe was existing. This this earth, this moon, or all this universe was in existence. Or lakh 9 lakh years ago, Sri Ram was there. He took birth, and his forefathers before that. So there's many years ago, and we do Sankalpa part when we do Yajya. Through this Sankalpa part, we know, the meaning of Sankalpa part? When we do Yajnas and Puja, then our Pandits, our Purohit says, At Brahmana, Dvitiya Prararde, Vaivaswate, Manvantre, they count whole days. From the beginning of this universe, the counting of the days was starting, and this was the tradition to count like this. When we count this, this is the January 2000, now 2001, 2002, 2003, like this. Through calendar, we know the days, the progress of days like this. From the beginning of this universe, when God created this universe, the puja was begun, and our Purohit, our all people counted this year, these days. And so like this, there is now one kharab, and like this, there is so huge. I will write the year of this universal year. 1,98,53,122. These years are gone. And this is proved through our scientists also. They saw all these things. The oldest thing, the stone age, or all these things, it is proved that many billion years ago, through this creation. So we should celebrate this universal year, and this is the year for all the world, not only for Hindus, for all. And so I wish this happy new year for all of you. And I think we should light and Deepak, we should light Deepak tomorrow as celebrating New Year. Now we proceed, and Sri Ramchandra's. You remember Nidarshana and Purvaja, or what we were discussing about? What happened in our last discussion? Vishwamitra came, and what did he demand to Dashrath, Raja Dashrath? Nidarshana, can you reply? You told a story about Rama, that Bhajan Maharaj is not having any son, a child. So he one rishi came and told to Dashrath Maharaj, "Do you do this yajna?" Then he do the yajna. Then one light reflects and give one sweet milk to give Dashrath Maharaj wife. Then Dashrath Maharaj, his wife,
Then for born 4 child Rama, Lakshmana, Bharata, Shatrugna. Thank you. But Vishwamitra told Rama his problem. What was his problem? That he is doing yajna and Rakshasas come there and they rain, they do the rain of blood and flesh in their yajna. They interrupt them and create obstructions for their yajna so that he could not complete his yajna. So, and these Rakshasas were, demons were sent by whom? Ravana. By Ravana, who was the king of Lanka. Then Sri Lanka. And when he told his problem to Raja Dashrath, then Raja Dashrath told, what do you want? He told him that I want your elder son, Sri Ramchandra and Lakshman to protect this yajna. He wanted whom? Ram and Lakshman. So he thought that they are able to kill those Rakshasas. But when Raja Dashrath heard about Ram and Lakshman, that Vishwamitra wanted that his sons will kill Rakshasas, Raja Dashrath became like a statue because he was so attached with his sons. It was obvious because he got his sons after a long time, and he was so attached. Every father is attached with his sons, with his kids. But Raja Dashrath was, because Ram was very sincere, he was full of many qualities, and he was loved by everyone, by all peoples. And for father, it was very shocking that he couldn't separate him from him, and so he was shocked, and he became like a statue, and he was not able to give any answer. And after some time, he became conscious and asked Vishwamitra, how can you imagine that these sons, especially Sri Ramchandra, could kill the Rakshasas? They are so strong, and they are furious, and they are so cruel, Rakshasas, and my sons are so delicate. They are so tender, their bodies are so tender. How can they face these Rakshasas? He couldn't imagine the strength of his sons because they were so tender, and they were looked after by Raja and their mothers. So he was not agreed to send them with Vishwamitra. He suggested him, who suggested? Raja Dashrath suggested Vishwamitra that I'll send my large army with you. They will kill the Rakshasas. They are very strong. My army is very strong. Army people are able to kill the Rakshasas. This is not possible for Ram and Lakshman to kill these Rakshasas. These are very cruel, and my sons are very delicate, and so I am not able to send them with you. May I proceed, or time is over? Time अब हो गया माता जी. So this was his attachment for his sons, Raja's attachment for his sons, that he was not able to recognize their power and their strength. So next week we will do
we will proceed. Okay. Thank you. एक आपको सवाल पूछने का था, जैसे कि एक in a son he's got the gene of his father, right? The father, mother, जो भी है. So when a great child is born in a family, obviously the parents also are having some greatness. Otherwise ऐसे ही कोई पैदा नहीं होता किसी कुल में. तो ये मेरे को बात समझ में नहीं आ रही है कि राजा दशरथ, did he not know the mahima and greatness of his son, that he's hesitating to send Ram Bhagwan, Maryada Pusha Ramchandra to the forest for killing these people? Does he know the greatness of these two, his son? Since he himself is a great and knowledgeable spiritual king. But it is obvious that sanskaras of mothers, parents and sons should be similar, but sometimes there are many differences. Now we see some parents are very good with good sanskaras, and their children are not so able, and sometimes parents are not illiterate or not so able, but children are. There is an optional also, optional cases. And Raja Dashrath was so in attachment. Now, when we are in attachment, and so we have no sense. जब भी हम ऐसे मोह में होते हैं तो हम नहीं जान पाते इस चीज को. And many times people, our children at home are very intelligent in school, but at home family member can't recognize their ability. जैसे बोलते हैं ना, घर का जोगी जोगड़ा, घर वाले को कोई नहीं जान सकता, उसको नहीं जान सकते. वो तो सिर्फ उसके मोह को बोलते हैं ना, अंधा है. Attachment is like blind, makes a people blind, and that they can't recognize the reality. That is the problem. Raja Dashrath was seeing, but he was not able, or he was not accepting their strength or their power. It is only the attachment that is making them blind, not recognizing their power. Very true, very true. So हम सबको इससे प्रेरणा मिलती है कि जितना हो सके हम भी अपनी संतान से मोह, उनसे प्यार करें, लेकिन उनसे मोह न रखें. Very good. That's a good point. Thank you, Mataji. धन्यवाद. और कोई कुछ सवाल करना चाहते याराவது माताजी கிட்ட हिंदी तमिल इंग्लिशல பதில் கேள்வி கேக்குறீங்களா? சத்சங் பந்த் करें. நிதர்ஷனா இருக்கியம்மா? vote of thanks சொல்றியா? vote of thanks அப்படியே கேஷுவலா சொல்லு. அப்படியே சொல்லு, நீ படிக்க வேண்டாம். you don't have to read it. Good morning, John and all present here. Good morning, Mila. Good evening. Good evening. Good evening. In this wonderful evening, I have a great opportunity to speak about our teachers. I especially Gaja Mataji. தமிழ்லயே சொல்லு. தமிழ்ல சொல்லுமா? Giridhar ji. மாதாஜி சொல்லுமா? Mataji. And our Trustee Raaj Ramchand ji. I thank you to my all teachers to teach us. Thank you. Have a nice day. उनको nanri, उनको thank you for telling the vote of thanks, ma. Very good, ma. Okay. So सबको धन्यवाद. माताजी धन्यवाद. अगले आज लक्ष्मी लोचना नहीं आई? नहीं नाम नहीं आता. लक्ष्मी लोचना नहीं आई है इस आज के दिन. ओके माताजी, सबको धन्यवाद. धन्यवाद. कल सेलिब्रेट करेंगे निदर्शना, न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे कल. நிதர்ஷன நியூ மாதாடி சொல்றாங்க, வீட்ல வந்து விளக்கு தீபக் வைக்கணும். புரியுதா? நம்ம இப்ப நீ சொல்றிய 2021 ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் பிறந்த பிறகு 2021 ஆனா நாடு நம்மளுடைய உலகம் தெரியும் எவ்வளவு பழசு. ஒரு கரபு
பல கோடி வருஷங்கள் முன்னாடி இந்த உலகம் வந்திருக்கான். இந்த பைத்தியக்கார பாரு அமெரிக்கனும் யூரோப்பியன் சொல்றான் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் வந்த பிறகுதான் உலகம் வந்துதான். நம்ம முன்னாடி இருந்தாங்க. புரியுதாமா? 4 yugas. அவ்வளோ வலிமையான நம்ம யுகம். புரியுதா? ஜனவரி 1 தானே நியூ இயர் கொண்டாடுறேன். இனிமேல் ஜனவரி 1 மட்டும் அல்ல, ஏப்ரல் 14 கூட கொண்டாடணும், ஏப்ரல் 1 கூட கொண்டாடணும். புரியுதா? ஏப்ரல் 14 தமிழ் நியூ இயர்ஸ். இன்னைக்கு ஏப்ரல் 1 வந்து நாளைக்கு வந்து செகண்ட் யூனிவர்சல். Tomorrow, happy Ugadi to everyone. Thank you. Happy Ugadi everybody to you. Happy Ugadi. Telugu New Year Day. Okay. Let us first respect our culture. Okay? Yes, definitely.